इस वक्त दस्तखत चल रहे हैं। आप देखिए विदेश मंत्री वहां पर मौजूद हैं दोनों तरफ के, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। ट्रंप यानी कि अमेरिका की इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, भारतीय बाजार को इससे फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होगा। EU के साथ ये डील चल रही है, यूरोपीय यूनियन के साथ ये डील चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है यूरोपियन कमिश्नर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड डॉक्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको माना जा रहा है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसका बड़ा जवाब है ये। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं जब यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच ये समझौता हो रहा है, दस्तखत हो रहे हैं, MOU पर साइन हो रहा है। और इस दौरान यूरोपीय यूनियन के यूरोपीय यूनियन कमीशन के अध्यक्ष मौजूद हैं, और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। एंड श्री विक्रम मिस्री, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हुआ है भारत और यूरोप के बीच। यूरोपीय यूनियन के साथ ये एक बड़ी डील है क्योंकि इससे बाजार खुलेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लागू करके दुनिया के कई देशों में उथल पुथल मचाने की कोशिश की है, अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है, ट्रेड को खराब करने की कोशिश की है, उसका यह बड़ा जवाब है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच। और आप देखिए कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन एक तरफ एक संगठन के साथ जब रूस के खिलाफ बात आती है तो नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा घोषणा किया और कई देशों पर टैरिफ लागू किया, तो यूरोपीय यूनियन ने खुद को इससे अलग रखने की पूरी तैयारी की। और यह डील जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। इससे क्या होगा यह भी हम आपको बता रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो भारत का ट्रेड है उसका द्वार खुलेगा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इन देशों के साथ। यूरोपीय यूनियन देश भारत के साथ ट्रेड करेंगे, ट्रेड बढ़ेगा। दोनों यूरोपीय यूनियन के साथ साथ भारत को भी इससे बड़ा फायदा होगा। डॉक्यूमेंट टाइटल्ड टुवर्ड्स 2030 अ जॉइंट इंडिया यूरोपियन यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा। I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, and Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellencies, President Antonio Costa और President Ursula von der Leyen, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। अपने दो करीबी मित्रों प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति
प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में
हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स, आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में यह एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमैक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। हम एकमत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। फ्रेंड, राष्ट्रों के संबंधों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। मैं एक बार फिर इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए, भारत के प्रति आपकी मित्रता के लिए और हमारे साझा भविष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Thank you, sir. Request His Excellency, Mr. Antonio Costa, President of the European Council, to give his remarks to the media. Prime Minister Narendra Modi, my dear friend, dear Ursula, ministers, dear Kaya and Maros, good afternoon. Thank you, dear Prime Minister Modi, for welcoming us on this special occasion. We were privileged yesterday to be your chief guests for the Republic Day celebrations. Such an impressive display of India's capabilities and diversity. Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations on trade, on security, on people-to-people ties.
I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. Then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. I would like to share three messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. That's why today's free trade agreement is of historic importance. One of the most ambitious agreements ever concluded, creating a market of 2 billion people. In a multipolar world, the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperity. But prosperity does not exist without security. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe, and around the world, reaching a new level of strategic trust between us. That is the significance of our agreement on a security and defense partnership. The first such overarching defense and security framework between India and the European Union, and the first step towards even more ambitious cooperation in the future. This brings me to my second message. As the world's largest democracies and champions of multilateralism, the European Union and India share the responsibility to upholding the international law with the United Nations Charter at its core. Earlier this morning, we and Ursula and President Ursula had the opportunity to pay tribute to Mahatma Gandhi. And I reflected upon his words, which still hold true today. And I quoted, "Peace will not come out of a clash of arms, but out of justice lived and done by unarmed nations in the face of odds." Our summit reaffirmed our commitment to supporting efforts towards a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, one that fully respects Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. This is a key moment. We are supporting all efforts to reach a just and sustainable peace.
Ukraine has shown its readiness, including at the cost of difficult compromise. I know, dear Prime Minister, that we can count on you to help creating conditions for peace through dialogue and diplomacy. And this is my final message. Together, we must show leadership on global issues. Cooperation between the European Union and India will help shape a more balanced, resilient, and inclusive global order. Just two examples. I'm proud of the commitments we are making for greater cooperation on clean energy, green transition, and climate resilience. And our collaboration through the Global Gateway and on the India-Middle East-Europe Economic Corridor is decisive for global connectivity. By implementing the ambitious Joint Comprehensive Strategic Agenda towards 2030, we will align our priorities with concrete actions for the next 5 years, delivering real benefits to our citizens. Today, we have tangible progress and set an example of cooperative leadership on global issues with our free trade agreement, our security and defense partnership, and our joint strategic agenda. These outcomes are crucial milestones on the longer path. We look forward to continuing the journey together, as always. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to give her remarks to the media. Dear Prime Minister Modi, distinguished friend, Antonio, my friend, ministers, especially Shankar and Guyal, Vice President Kallas, Commissioner Šefčovič, Excellencies, friends, thank you very much for the exceptional hospitality we experienced. It was such an honor for us to be your chief guests at the Republic Day yesterday. This is a memory I will carry for a lifetime, because the sense of communion was so powerful. People filled the streets united in pride and joy of belonging to the Indian nation, and rightfully so. India has risen, and Europe is truly glad about it, because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. Prime Minister Modi, dear friend, 1 year ago the full College of Commissioners came to India. You mentioned it. And this is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment. Today we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes. And it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. At the same time, this agreement will build on the natural complementarity of our economies.
It brings together Indian skills, services, and scale with Europe's technology, capital, and innovation. It will create levels of growth that neither side can achieve alone. And by combining these strengths, we reduce strategic dependencies at a time when trade is increasingly weaponized. We